I don't like this city because I do not have much friends here. Wait, much friends or many friends? I don't know. Even the coffee is not good. There isn't many sugar in it. Wait, many sugar or much sugar? आपको पता है करेक्ट आंसर क्या है? हो सकता है आपको पता हो, बट उसके पीछे का लॉजिक क्लियर ना हो. Or maybe you don't know the answer at all. Don't worry, you're not alone. These two words, much and many, confuse many learners. But I promise, after the end of this video, you will have zero confusion. और मैं आपको एक मैजिकल फ्रेज भी बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो. And you absolutely cannot go wrong with it. So इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा. Right? So let's look at these examples and feel the difference before we dive into the grammar. Sentences with much. I don't have much water in my glass. There isn't much air in this tire. They don't have much knowledge about the subject. How much money do you need? Now sentences with many. I don't have many friends in Delhi. We visited many places on our trip. She doesn't make many mistakes. Are there many buses to the airport? Now that you've seen some examples with much and many, let's understand the key differences. Key difference number 1. If you notice, जितने भी nouns हमने much के साथ use किए हैं ना, जैसे कि water, air, knowledge, money, they all are uncountable nouns. Yes, much is always used with uncountable nouns. Uncountable nouns वो होते हैं जिनको हम numbers में directly count नहीं कर सकते. क्या हम कह सकते हैं कि मेरे ग्लास में 2 पानी है? No, because we cannot count water. We can say 2 glasses of water, but यहाँ पर हम glasses count कर रहे हैं. Water अपने आप में हमेशा uncountable ही रहेगा. इसी तरीके से हम नहीं कह सकते कि टायर में 5 हवा कम है, या मुझे इस सब्जेक्ट की 2 नॉलेज है, यहाँ मेरे पास 4 पैसा है. अब आप कहोगे पैसा तो हम काउंट कर सकते हैं. यस, बट जैसे वाटर के लिए ग्लासेस की जरूरत पड़ी थी, वैसे मनी को काउंट करने के लिए हमें कॉइन्स या करेंसी की जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल 4 कॉइन्स या 100 रुपीज. वी डोंट से कि 100 मनी, राइट? सो मनी अपने आप में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है. सो रिमेंबर, नेवर यूज many with uncountable nouns. Always use much. So that was about much. Now let's look at many. Many is always used with countable nouns. Countable nouns वो होते हैं जिनको आप गिन सकते हो. For example, books, places, mistakes, buses, cups, cars, countries. See, आप कह सकते हो कि मेरे पास 5 बुक्स हैं, मैं 4 कंट्रीज में घूम चुका हूं, 1000 मिस्टेक्स करने के बाद मैंने इंग्लिश सीखी. So you can count all of these. That's why we use many with countable nouns. So remember, never use much with countables. Always use many. Now let's look at the key difference number 2. Much is generally used with singular uncountable nouns. Why? Because uncountable nouns हमेशा singular ही होते हैं. जब उनको काउंट ही नहीं कर सकते तो उनके प्लूरल्स का पॉइंट ही क्या हुआ, राइट? जैसे कि हमने अपने एग्जांपल्स में यूज किया था water, not waters, air, not airs, knowledge, not knowledges, money, not monies, right? On the other hand, many is always used with plural countable nouns. It will always be many books, many mistakes, many cups, many cars, right? So ये 2 मेन ग्रामेटिकल डिफरेंस होते हैं बिटवीन मच एंड मैनी. लेकिन इंग्लिश सिर्फ ग्रामर तक लिमिटेड नहीं है. सिर्फ रूल फॉलो करना ही सब कुछ नहीं होता. एक और चीज होती है, साउंडिंग नेचुरल. और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप मच और मैनी यूज करते हो. तो चलिए देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, मच एंड मैनी कॉमनली जो है ना वो यूज होता है नेगेटिव्स और क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस के साथ. देखिए, ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी यूज नहीं कर सकते, बट ये थोड़ा सा फॉर्मल लगता है. स्पोकन इंग्लिश में नेटिव्स ज्यादातर इन्हें नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, आई डू नॉट हैव मच टाइम. हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू हैव? शी डजंट मेक मैनी मिस्टेक्स.
Do you have many friends? Right? With negatives and interrogative sentences. लेकिन जब natives positive sentences में much या many use करते भी हैं ना, तो अक्सर with modifiers. For example, with too much or so many. So instead of saying I have much sugar in my coffee, they say I have too much sugar in my coffee. Right? So other examples. There are too many cars on the road. She made so many mistakes. I have read so many books about history. एक और मैजिकल फ्रेज है जो नेटिव्स अक्सर यूज करते हैं. रिमेंबर द वन आई प्रॉमिस्ड यू. और मैं इसको मैजिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पे कोई रूल अप्लाई ही नहीं होता. आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, टू मच या सो मेनी इन सब के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. ये हर जगह यूज हो सकता है. और वो मैजिकल फ्रेज है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ. अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है. So instead of saying I have many friends, natives usually say I have a lot of friends. We drank a lot of water. She has lots of ideas. Right? So that's all for the explanation. But before we finish, I have a quick quiz for you. Question number 1. Choose the correct option. There aren't blank buses after 10 p.m. Much buses, many buses, a lot of buses. That both many or a lot of can be used. Question number 2. She gave me blank useful advice before the exam. Much useful advice, many useful advice, yeah, a lot of useful advice. Tell me your answers in the comment and I will tell you whether you're right or not. So जल्दी ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. If you found the video useful, then don't forget to like, share and subscribe.